I hope all of you are doing well. Today I'll be solving the problem number 1399, which is count largest group. This problem is available on LeetCode, and this is today's problem of the day as well. So after understanding the explanation code of this question, you all can go to LeetCode and try to solve this question on your own as well. So I read the discussion forum. I found out that most of the students have commented that the explanation of the problem statement is not enough or is not appropriate. Some even commented that this is the worst written problem statement available on the website. So I think those students have not understood the problem statement. But trust me, this is an easy question. And after understanding, if you try run this test case, you'll be able to understand that yes, this problem statement is enough to solve this problem. And yes, this is an easy problem. So let's first read the question. You are given an integer n. Each number from 1 to n is grouped according to the sum of its digits. Return the number of groups that have the largest size. Okay. So now let's try run example number 1 where n is equal to 30. First, if you see, I've written all the numbers which are present between 1 to n, where n is equal to 13. तो अब हम क्या करते हैं कि हर एक डिजिट का सम कैलकुलेट करते हैं और हर एक नंबर के हर एक डिजिट का सम. So for n equal to 1, the sum of its digit would be 1. Similarly, for n equal to 2, the sum of all its digits would be 2. Similarly, for a two-digit number, let's say 10, the sum of all its digits is 1. And for 13, the sum of all its digits is 4. Why 4? 4 because 1 plus 3 is 4. Okay. So now let's understand कि grouping कैसे हो रही है. Question में दिया है to return a number of groups that have the largest size, and these numbers are grouped according to the sum of its digits. Sums हमने यहाँ पे calculate कर लिया है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and then again 1, 2, 3, 4. So tell me how many numbers have the sum of its digits as 1. If you see 1 has a sum equal to 1 and 10 also has a sum equal to 1. So these two numbers 1 and 10 form a group, and the size of this group is 2 because two numbers have the sum of its digits as 1, right? Similarly 2 भी एक ग्रुप बनाता है जिसका सम 2 है और इसका भी साइज 2 है. साइज 2 इसलिए है क्योंकि 2 और 11 दो नंबर्स हैं जो कि जिनके हर डिजिट का सम इक्वल टू 2 है. सिमिलरली 4 का देखते हैं, कितने ग्रुप्स हैं जिनका सम 4 है, कितने नंबर्स हैं जिनका सम 4 है. 4 का सम 4 है और 13 का सम 4 है. तो फिर सम 4 के ग्रुप का साइज क्या होगा? 2 होगा क्योंकि दो नंबर हैं, राइट? तो फिर अब हम देखते हैं कि हमारा जो ग्रुप है सम का वो कहाँ से कहाँ तक हो सकता है. In the constraint section, you will find that n lies between 1 to 10 की पावर 4. तो मुझे इतना पता है कि जो भी मेरे ग्रुप्स हैं, जो लीस्ट सम होगा वो इक्वल टू 1 होगा क्योंकि मेरा स्मॉलेस्ट नंबर 1 है, राइट? और 1 का सम तो 1 ही होगा. 10 का सम भी 1 होता है हर डिजिट का. तो जो मेरा ग्रुप लाई करेगा वो उसका जो मिनिमम सम होगा वो 1 होगा. और 1 का मैंने बताया कि साइज 2 है. साइज 2 इसलिए क्योंकि 1 का सम भी 1 है और 10 का साइज भी 1 है. अब हमको ये देखना है कि मैक्सिमम हमारे ग्रुप का सम क्या हो सकता है. तो हमारा जो लार्जेस्ट नंबर है एन का वो 10,000 है. तो हमें एक ऐसा नंबर ढूंढना है विच लाइज बिटवीन 1 to 10,000 जिसके डिजिट्स का सम मैक्सिमम हो. तो मैक्सिमम सम किसका होगा? ऑफ कोर्स 9999,999 का होगा. इसका सम होगा 36. तो मतलब मेरे 1 से लेके 36 तक ग्रुप्स बन सकते हैं, राइट? तो ये टोटल कितने ग्रुप्स हो गए? 36 ग्रुप्स, राइट? तो फिर हर ग्रुप का कुछ साइज होगा और क्वेश्चन हमको बोल रहा है कि रिटर्न द नंबर ऑफ ग्रुप्स दैट हैव द लार्जेस्ट साइज. तो सपोज जो मेरा लार्जेस्ट साइज आता है वो 2 आता है. तो अब जैसे इस एग्जांपल में मैं देखता हूँ मेरे 1 सम के ग्रुप का भी साइज 2 है, 2 सम के भी साइज ग्रुप का साइज 2 है, 3 का भी 2 है.
तो 1 + 1 + 1 मैं 3 रिटर्न कर दूंगा, राइट। तो फिर आई थिंक वी आर डन विद द इंट्यूशन एंड वी कैन स्टार्ट विद द कोड। ओके, सो first I'll create a vector. Look, wait, first I think I should. This is done. Let's start the code part again. So first I'll create a vector of integers and I'll name the vector as groups. So like I said, my maximum sum is 36, right? So the sum would vary between 1 to 36. So I have to create a vector of size 37 and initially I would initialize each element equal to 0. आपका फर्स्ट होमवर्क ये है कि आप बताओ 37 साइज का मैंने ग्रुप क्यों बनाया है। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट हम क्या करते हैं कि हर एक नंबर के डिजिट्स का सम कैलकुलेट करते हैं। सो फॉर इंट आई इक्वल टू 1 आई शुड बी लेस देन इक्वल टू 13 आई प्लस प्लस। तो हमारा नंबर होगा आई के बराबर इनिशियली, राइट। और जो हमारा सम है वो इनिशियली 0 है। वाइल num is greater than 0, sum plus is equal to num modulus 10 and num by equal to 10 and after this suppose मेरा सम 1 आता है तो फिर मेरे को अपने ग्रुप्स में जाके काउंट भी एक इंक्रीज करना पड़ेगा क्योंकि मेरे को एक नंबर मिल गया है जिसका सम 1 के बराबर है। तो फिर मैं ग्रुप्स में गया और सम पे गया और इसके काउंट को मैंने बढ़ा दिया जो कि इनिशियली मेरा काउंट 0 था। अब मेरे पास एक वेक्टर आ गया है ग्रुप्स और हर ग्रुप का साइज है मेरे पास। पर क्वेश्चन इज स्टेटिंग दैट रिटर्न द नंबर ऑफ ग्रुप्स दैट हैव द लार्जेस्ट साइज। अब मैं लार्जेस्ट साइज कैसे कैलकुलेट करूं? एक तरीका है कि आप लीनियरली हर एक एलिमेंट पे जाओ और मैक्सिमम साइज कैलकुलेट करो, या फिर एक हम बेसिक सा फंक्शन भी यूज कर सकते हैं विच इज मैक्स एलिमेंट। इसको मेरे को ग्रुप्स डॉट बिगिन, इसको दो पैरामीटर्स देने पड़ेंगे, एक इनिशियल आइटरेटर होता है और एक एंडिंग का आइटरेटर होता है। ये बताते हैं कि हमको कहाँ से कहाँ तक मैक्स एलिमेंट निकालना है। ग्रुप्स डॉट एंड, तो मेरे पास मैक्स साइज है। अब मेरे को बस काउंट निकालना है कि कितने ऐसे ग्रुप्स हैं जिनका साइज मैक्स साइज के बराबर है। तो मैं इनिशियली काउंट एक वेरिएबल इनिशियलाइज करता हूँ टू 0 और फिर अब मैं अपने ग्रुप्स वेक्टर में जाके देखता हूँ कि कितने एलिमेंट्स मेरे मैक्स साइज के बराबर है। लेस देन 57 आई प्लस प्लस, वी कैन स्टार्ट फ्रॉम आई इक्वल टू 1 एज वेल बिकॉज कोई भी ग्रुप ऐसा नहीं होगा जिसका सम इक्वल टू 0 होगा। ग्रुप्स आई equal to max size, then we can simply increase the count and after it we can return the count. Hmm, I think this solution is correct. Let's try to run it on the available test cases. I think I missed something. Right. I have hard coded it to 13. It should be equal to n. Okay, see, this is working. Now let's try to submit this as well. See, as you can see, we are able to successfully submit this solution. So I hope you understood
whatever I explained. And if you didn't, don't shy away from writing it in the comments. I try to answer each and every comment. Now let's come to the homework questions that I said. I've already given you a homework, right? So try to answer that. My second homework would be, see, here we are using a groups vector, right? We could have used the hash map as well. Uh, so tell me, what's the advantage of using a vector instead of a hash map? So my third question would be, if I I'm iterating from I equal to 1 to I equal to 37, right? So 9, 18, 27. Okay. So if I iterate it from I equal to 1 to I equal to 28, let's say, what do you think? What will happen? Let's try to submit it. Oh, this works. Let's try to submit it now. Uh, this is also working. So in the comment section, I want you to answer why this question, we are able to submit it, but we are only iterating from I equal to 1 to I equal to 28. Whereas our maximum sum is 36, right? 9 plus 9 plus 9 plus 9, it was equal to 36, but we are only uh, traveling till 28. So answer this. And okay, that's it. Three questions for today. Answer them, and please like, share, and subscribe as well. I'll try to post the solutions to all the problem of the day questions from today onwards. So if you like my video, if you like whatever I explained, you can like the video, and don't forget to share it with your friends as well. Thank you so much.